गर्व से, खुशी से, प्रेम से, उत्साह से और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं परम आदरणीय श्री प्रेम रावत जी का। Bueno, damos la bienvenida a Prem Rawat. आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं Hoy día nos hemos reunido और आज जो आप अभी तक सुनते आ रहे हैं y hoy hemos उसके estado हिसाब escuchando. से महत्वपूर्ण दिन है। Hoy día es un día importante ठीक 50 साल पहले porque 50 años atrás exactamente मेरे को ये मौका मिला me dieron la oportunidad a mí इस संदेश de को más सारे विश्व तक लाऊं। de llevarlo a ese planeta, su autoridad. मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज जी की इच्छा थी, उनका यही Este fue el deseo de mi maestro, कहना mi था padre. कि ये मेरा संदेश सारे विश्व में ले जाएगा। इसीलिए उन्होंने Y él dijo, este es mi mensaje de paz, llévale a todo el mundo. मुझे अंग्रेजी में एक स्कूल में डाला था कि मैं अंग्रेजी सीखूं और Es por eso que me puse en una escuela de inglés, para que yo pueda aprender inglés y hablar inglés. क्योंकि ये हमको नहीं मालूम Porque yo no था sabía कि लोग इस बात को समझ पाएंगे या नहीं। Si la gente del occidente entendería lo que iba a decir o no. Simplemente era un experimento, un esfuerzo. देखते हैं क्या होता है। Vayamos y veamos qué va a pasar. और जब हम Y गए cuando fui al occidente, तो लोगों ने इस बात को पकड़ा। la gente agarró este mensaje porque cualquier diferencia que teníamos, o habíamos creado, किसी को देखते हैं ये हिंदुस्तान का नहीं cuando vemos a alguien decimos, esta persona no es de India, esta persona no es de este país, es blanco, es negro. ये भेदभाव Estas diferencias हमारी están en nuestras cabezas, असलियत में no नहीं। están en la realidad. ये भेदभाव सब मनुष्य के Esas बनाए diferencias están creadas por cada ser humano. और इन्हीं भेदभावों से Por razón de estas diferencias, न जाने कितने अनगिनत लोग quién sabe जा चुके हैं। cuántas personas han sido परंतु matadas. देखने की बात है कि मनुष्य मनुष्य है। Pero resulta que el ser तो मैं humano आपको es un ser सुनाता humano. हूँ जो मैं 50 साल पहले जो जिम्मेवारी मैंने संभाली वो है कि Así que voy a मैं hablarles कुछ acerca आपको de esta ऐसा responsabilidad que yo बताऊं tomé 50 años atrás, जिसको जान करके आपके जीवन में que yo te puedo परिवर्तन mostrar और बढ़िया algo y परिवर्तन a través de esto puedes encontrar una transformación hermosa en tu vida. आपके जीवन में Que en आनंद tu vida puedes experimentar contento. ¿Por qué? कल एक मेरी वेबसाइट है premrawat.com Tengo esta página web, तो उसमें premrawat.com, मैं एक पंक्ति में अपने भाव y या en अपने ख्याल este yo लिखता हूँ escribo mis pensamientos del और día. हर रोज एक नया Cada ख्याल día या hay un भाव nuevo मेरा उसमें pensamiento आता है। para el día que se muestra तो en esta उसके página लिए web. मैं quotes लिख रहा था Así que estaba escribiendo unas citas, और एक quote मैंने y लिखा, una cita que एक escribí, भाव मैंने अपना una लिखा expresión, उसमें, एक पंक्ति है y era de un solo párrafo, जब de una sola oración. तुम इस दुनिया से जाओगे, Cuando te vas de este mundo, जब तुम इस दुनिया से cuando te vas जाओगे de este mundo, तो तुम्हारा जो अनुभव है वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। lo que has experimentado se irá contigo. अब इस बात को समझाना पड़ेगा Ahora tengo que क्योंकि ये बात छोटी explicarles, मोटी नहीं, लिखने के बाद esto no es algo ordinario. लिखने के बाद Después सवेरे de लिखा haberlo मैंने escrito, yo lo escribí por la और तब से mañana, मैं सोच y रहा desde हूँ entonces he estado pensando, ये कितनी गंभीर बात है। es algo con bastante profundidad. मुंह, आंख, Que tus उंगलियां, ojos, दिमाग, tu nariz, ये सब यहीं रह जाएगा tus oídos y todo será dejado aquí, atrás. और इनको देखा जा सकता है, इनको छुआ जा सकता है। तुम्हारे दिमाग को छुआ Puedes जा, तुम ver चले eso, जाओ, tocar eso. जब चले Puedes, जाओगे इस tu संसार cabeza se puede tocar, aunque estás fuera de तुम्हारी este उंगलियों mundo. को छुआ जा सकता Te है, pueden tocar los dedos.
तुम्हारे नाक को छुआ जा puedes tocar सकता la है nariz, और तुम्हारे जाने के बाद जिन भी चीजों में तुमने y विश्वास después किया, de irte, कोई और भी todas विश्वास las कर सकता है cosas उन्हीं que चीजों में। tú has confiado o has creído, otras personas que han creído también. परंतु बात यहाँ आम खाने की नहीं है, Pero aquí no se trata de comer el mango, बात यहाँ आम खाने की नहीं no है, se बात trata है de comer el mango, sino आम खाने से जो आपको आनंद Yes. मिला। después de comer el mango, el contento que sientes, आम तो रहेंगे आपके el जाने के placer. बाद, और कोई ना कोई और खाएगा उन आमों को, और उसको भी मजा Los आएगा खाने mangos में। estarán todavía aquí después de que te vayas. Otras gentes परंतु comerán जो आपका mangos. निजी अनुभव Pero था la experiencia personal tuya se dio. वो आपके साथ चला गया, अब सही बात वो नहीं contigo. होगा, दोबारा वो कभी नहीं होगा। Eso nunca pasará otra vez. तो प्रश्न Entonces बनता la है pregunta viene a ser, कि इस जीवन में आपका निजी अनुभव क्या है? ¿cuál es tu experiencia personal en esta vida? प्रश्न बनता है La कि pregunta आपका इस viene a जीवन ser, में निजी अनुभव क्या है? क्या आपके जीवन En में esta vida, ¿cuál es tu experiencia personal आनंद है? en tu vida? ¿Tienes contento? आनंद है ¿Sientes satisfacción? या कलेश है, ¿O lo que sientes es caos? दुख है, ¿O tienes dolor? चिंताएं हैं? ¿Sientes preocupación? क्या होता है आपके जीवन के अंदर हर प्रतिदिन? क्या होता है ¿Qué es lo que pasa en tu vida diariamente? जब से आप अपने चरपाई पे लेटे हुए आंख खोलते हैं? Desde el momento en que abres los ojos en tu cama, ¿qué sucede? चिंताएं सताती हैं आपको? Tus preocupaciones comienzan a क्या करना atacarte, है, lo que tienes क्या que होना hacer, चाहिए, lo que debería pasar, क्या नहीं होना lo que no चाहिए? debería pasar. या हर पल आप अपने जीवन में उस O असली cada momento de आनंद tu vida का अनुभव करते हैं? निजी está रूप से। concentrada en experimentar ese contento verdadero. बहुत बड़ा प्रश्न है ये, Es una buena pregunta, क्योंकि ये जो आपका अपना निजी अनुभव है, ये आपका है। porque esta experiencia personal que tú tienes es tuya, no la puedes dar a nadie. और जब आप नहीं रहेंगे तो ये अनुभव भी नहीं रहेगा। Y cuando tú dejes de existir, esta experiencia dejará también de existir. मैं फिर पूछता हूं, Así que te pregunto una vez más, ¿qué es? कबीर दास जी कहते हैं, Kabir dijo, जन्म मरण की कबीर दुविधा जी से। भागी, समरथ नाम भजन ल लागी। que mi ciclo de muerte y vida मेरे सदगुरु existe. दीनी सैन y estoy atrapado सत्य recordando घर ese nombre. पाए Mi गए। maestro me ha mostrado la forma बरसन लागियो रंग, y he encontrado mi hogar verdadero. शबद झड़ लागियो री। Y estoy pintado con los colores que trae ese amor. चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, पीछे Camino hacia adelante y el camino de atrás त्रिकुटी महल, ha pasado. त्रिकुटी महल, Yo camino hacia un palacio, त्रिकुटी महल, a mi tercer ojo. पुरुष एक राजा, Y ahí está अनहद की झंकार, el rey. Y puedo escuchar la अनहद música की y झंकार, el silencio.
अनहद की escuchar la झंकार música en el silencio, बजे वहां बाजा। y eso sin ningún instrumento. अनहद, जब तबला Cuando बजाते tocas हैं las या tablas कोई भी de cualquier instrumento म्यूजिकल musical, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, cuando एक se तो hace el आवाज sonido, हुई और फिर existe आवाज el नहीं sonido करनी है। y existe el silencio, करनी है los silencios. नहीं करनी है। एक हुआ हद, एक Uno हुआ es el sonido अनहद। y otro es la pausa. Y en esa अनहद pausa, en ese silencio, साइलेंस में, उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर उसको क्या en la कहते हैं música tú lo puedes संगीत ver के बारे में aquello, लें, तो हद la अनहद, música y या el फिर आप उसको silencio, y lo वो भी puedes ले ver सकते हैं también जिसकी कोई सीमा como, नहीं है। हद सीमा, como अनहद un जिसकी límite कोई सीमा नहीं, o उसकी झंकार, limitado. Pero el escuchar esa और वहां música, जाकर के मैं बसा। yo he estado ahí. क्या ये आपका अनुभव है? Es tu experiencia, es lo que sientes. अपने पिया संग जाकर सोई, Yo he ido a ver a mi adorado, अपने he पिया estado संग con mi जाकर adorado, सोई, y todas mis dudas संशय शोक han रहा नहीं desaparecido, कोई। mi tristeza no existe más. कट गए कर्म कलेश, भरम Y भय mi duda, भागारी। mi miedo, desapareció. क्या क्या Miren las शब्द कहे palabras, हैं? cómo se expresa. Miren las palabras. क्या क्या शब्द कहे हैं? Duda, भरम mis miedos भय desaparecieron. भागारी। Mis dudas भरम खत्म हो गए, भय ya no están más. Y también mis miedos no están más. ये है आपका अनुभव Esto, ¿tú sientes? या कोई दूसरा? O es otra cosa lo que sientes. शब्द विहंगम चाल हमारी, El caminar por esta senda शब्द del hombre विहंगम चाल verdadero. हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। कैसे? Y Kabir dice, el क्या maestro आनंद है? me ha mostrado y रिम me ha झिम। guiado en este camino. ¿Y cómo es? मूसलाधार Es बारिश como नहीं हो रही una है, llovizna, रिम una झिम। llovizna suave. No es una lluvia fuerte, कभी देखा है solamente रिम झिम es बारिश una में? llovizna. ¿Han visto ustedes सब शांत हो जाता una है, बस llovizna suave? टक 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 Todo टक de टक टक, pronto queda en silencio. आवाज भी नहीं होती है, सब Aún रिम el झिम रिम झिम, silencio es वो वर्षा होती है, más silencioso, es una lluvia सब उसमें भीग muy जाता है। suave. मूसलाधार बारिश Todo, नहीं, todo रिम se झिम, moja. Esta no es una रिम lluvia झिम muy होए, fuerte, sino es una lluvia. काल बस आए गए, काल को भी बस में ले लिया। Aún la muerte ha sido controlada, ha sido capturada. तो मेरे को लगता है कि हम सभी के जीवन में ये संभावना है Yo pienso que todos nosotros tenemos esta posibilidad en nuestras vidas. ये संभावना है। Todos tenemos esta posibilidad. और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इस तक पहुंचे हैं? Y lo que sea que estamos Ya no. haciendo, ¿hemos llegado allí o no? इस तक पहुंचे हैं या नहीं? ¿Hemos llegado a ese lugar o no? ये हमारे जीवन में सच हुआ है या नहीं? Esto se क्या हमारे ha जीवन transformado में en una realidad en उस nuestras रंग vidas की o no. बारिश चालू हो गई है La ya no. lluvia de ese color ha comenzado en nuestras vidas
कि यही साथ जाएगा। Resulta que esto es lo que te vas a llevar. जितना भी तुम धन कमाओगे, इसमें से No importa cuánta riqueza hayas acumulado, इतना भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ni siquiera esta poquita cantidad irá contigo. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन मत कमाओ, No estoy diciendo que no ganes dinero, पर तुम जिस प्रकार कमाते हो वो ऐसा कमाते हो कि साथ ले जाओगे। pero en la manera en que ganas dinero, ये अंतर है। luce como मैंने te कहा कि llevarías धन मत कमाओ, contigo. कमाओ, No digo que no ganes, digo पर जब gana. कमाओ तो ये pero याद cuando रहे कि ganes, इतना भी तुम्हारे साथ recuerda que नहीं ni जाएगा। siquiera una pequeña cantidad se irá contigo. तुम्हारे जीवन में दो मौजों की संभावना है। एक मौज En tu vida hay dos posibilidades de Party, entretenimiento. Uno, despejarse, पार्टी करो, tener fiesta. दूसरी संभावना है अपने पिया संग जाकर सोई। संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म Y el otro कलेश। es Para- estar con tu Yeah. adorado y permitir जब तक que नहीं las होगा dudas कि y अपने miedos पिया desaparezcan. संग जाकर Hasta que eso suceda, que ये tú भी मौज है। estás con tu adorado, recuerda ये भी मौज que है। eso también es un entretenimiento, es algo que se disfruta, ये भी मौज है que también es और वो भी entretenimiento. मौज है कि मैं अपने जीवन में Y ese उस चीज का अनुभव Es un करूं। और entrenamiento सबसे बड़ी बात, que yo puedo experimentar en mi सबसे vida. बड़ी बात, जिस चीज के बारे में कबीरदास जी ने चर्चा की है, y Kabir habla बाहर sobre की चीज esto. नहीं। Él dice, no es algo que está afuera. ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा El साईं तुझ में aceite जाग está en सके la semilla de तेज। sésamo y también está en la chispa del fuego, लोग igual en el हम ser शांति की humano. बात Yo करते hablo sobre la paz. इस सारे संसार के अंदर शांति क्या है किसी को नहीं En मालूम, el mundo la gente no sabe lo que es la paz. Nadie sabe lo que किसी को realmente es la नहीं paz. मालूम, Nadie sabe. किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े लोगों Yo, के इस बात yo me he साथ sentado con बैठ करके gente हमने बात muy की। importante. क्या है लोगों का? Esta gente dice, क्या ¿qué करना tenemos que पड़ेगा hacer शांति para के लिए? lograr la paz? अब जो हम सोचते हैं वो Y कह yo, तो yo सकते नहीं हैं pienso, उसको कि y गधे की realmente दो, no puedo decirles a शायद जो ellos, तेरे अंदर पहले से ही है, तो अच्छी तरीके से tú, कहना पड़ता है, idiota, कहते हैं। tú eres un देखिए जी, asno, आपके un burro. अंदर शांति पहले से ही है, La paz está dentro de ti, pero tienes que decirlo de una forma más और bonita, सच में decirle que la paz गधे ने क्या गलती की está है जो dentro गधे de के ti दूध en को भी realidad. क्या कहते हैं ये कहा जाए, Bueno, पर नहीं मालूम है al लोगों को burro कि le जिस acusamos de ब्रह्म ser की estúpido, pero तुमको la gente तलाश no है tiene idea वो que तुम्हारे अंदर, ese divino que buscas está dentro de ti. जिस शांति की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर La है, जिस paz आनंद que की buscas तुमको तलाश है dentro de तुम्हारे ti, अंदर el है, और इतने contento सारे está लोग dentro बैठे de हुए ti. हैं यहाँ, और Y मैं todas ऐलान करके estas कहता personas हूँ que están कि aquí कहने के sentadas, बाद yo भी puedo तुमको decirles नहीं que मालूम है कि aún तुम्हारे अंदर, después de decirles esto, todavía no saben que la paz está dentro de ustedes. क्यों? ¿Por qué? क्यों? ¿Por qué? क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है उसको मालूम कैसे पड़ेगा उसके अंदर क्या है और क्या नहीं Porque है। a menos que कौन el है ser वो, humano कौन नहीं है। reconozca quién es, ¿cómo va a saber qué está dentro de sí? परंतु जो कुछ dentro de भी sí है mismo? तुम्हारे जीवन Lo- के अंदर ¿Qué es lo तुम्हारा que siente? एक ही Ahora, lo que जो sea que तुमने pasa अब en tu तक देखा vida, है वो ये है कि अच्छा तुम में कुछ नहीं, solamente has visto un solo lado, y eso es अच्छा que तुम में no hay कुछ नहीं। nada bueno contigo, que dentro de ti no hay nada धन bueno. आएगा Ese तब es el तुम lado धनी que बनोगे, tú sabes. Tú sientes
que cuando धन आएगा la riqueza तब te तुम llega, te धनी sientes बनोगे। rico. तुम जो धनी हो, धन Pero- आने से पहले pero tú उस eres धनी को तुम नहीं जानते। Ese, tú ya वो है eres असली धनी। esa उस persona धनी के बिना तुम rica, जितना भी no धन lo कमा लो, reconoces. तुम गरीब रहोगे। Pero si ganas ese dinero en el exterior, no importa उस धनी cuánto के बिना ganes, si no तुम llegas a जितना भी conocer धन que tú कमा eres लो, तुम realmente फिर भी गरीब रहोगे। afortunado, और वो siempre धनी serás तुमने pobre. अभी पकड़ा नहीं। Sin experimentar esa fortuna interior, no entenderás nada. तो इस जो वीडियो देखी उसमें देखा होगा, मैं साफ कह रहा हूँ, Yo he visto मैं un मसाया video नहीं हूँ, antes de hablar. मैं Yo कोई digo ahí प्रॉफिट नहीं que हूँ, yo no soy क्योंकि el Mesías, लोग no मेरे soy un मेरी तरफ profeta, देख कहते porque हैं, la gente me mira आप y मेरा dice, कुछ ऐसा करिए कि आप haz मेरे में algo, शांति हो hazme जाए। algo para que yo pueda experimentar paz. घोड़े को पानी तक घसीट के ले जा सकता है, पर घोड़े को पानी नहीं पिलाया जा Llevar सकता। a un caballo al agua, pero no puedes obligar अगर उसकी पीने की इच्छा a tomar नहीं है, तो agua. कौन क्या करेगा? Si el caballo no quiere beber, गुरु बेचारा क्या nadie करे? podrá hacer nada. शब्द न लगे अंग El कहे pobre कबीर maestro, कोरी गजी, ¿qué va a hacer कैसे लागे? si las palabras no ¿Qué penetran a esta persona? Este lienzo blanco sigue siendo un गुरु blanco. कर ¿Qué लिया, puede hacer el maestro? किसी ने कुछ La कर लिया, gente किसी ने tiene कुछ sus कर लिया, gurus, हम sus उस तीर्थ यात्रा पे maestros, चले गए, alguien हम उस dice तीर्थ यात्रा पे esto, चले गए, alguien हम ha उस hecho तीर्थ esto, यात्रा पे चले गए, हम वहाँ voy a चले ir गए, हम वहाँ a चले गए, este हम ये कर लिया, हम वो कर लिया, peregrinaje, haré अब हम esto, बैकुंठ haré जाएंगे। lo otro y después podré ir कबीरदास al जी cielo. कहते हैं Y Kabir कि dice राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो वैकुंठ que न हो a तो mí कहाँ me जा han रहे हो? invitado para salir de este mundo. Él comienza स्वर्ग में रहते हुए que contento que ha तुम encontrado अपने को aquí en compañía de su maestro. स्वर्गवासी No समझते se हो? encuentra en ningún cielo, en ningún otro cielo. नहीं, कोई मर जाता है तो कहते हैं वो Cuando स्वर्गवासी alguien हो गया। muere, tú dices, esa persona se fue al cielo. और स्वर्गवासी हो तुम और कहते हो किसी और को जो यहाँ है नहीं। Tú eres la persona que está viviendo en el cielo y dices que la persona que no और क्या está acá है, más. बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बड़ी बड़ी पुस्तक छापते हैं, उनमें क्या स्वर्ग की एक छवि दिखाई हुई है, वहाँ लड्डू रखे हैं, वहाँ पेड़े रखे हैं, वहाँ बादाम रखे हैं, que और बिना escriben बत्ती के कैसे libros खाओगे? con descripciones del cielo, con diferentes pasteles, dulces y dulces. अच्छा हो सकता है Este लड्डू cielo को tú थोड़ा vas a बहुत comer. करके खा भी लो, बादाम Los कैसे खाओगे? ladus, que son estos pastelitos muy और अगर suaves, लड्डू puedes में comer, बादाम है pero, तो वो तो गड़बड़ करेगा। por ejemplo, ¿y cómo vas a comer la almendra que está dentro de este pastelito ये hindú बत्ती que सी se कहाँ llama रह ladú? जाएगी? नहीं रह जाएगी, Estos 32 dientes se quedarán aquí. ¿Por qué? क्योंकि तुम्हारे पास दोनों ही Dentro de संभावना ti है, tienes dos तुम दुखी भी हो posibilidades. सकते हो और सुखी भी हो Puedes सकते हो। क्या disfrutar तुमने o कभी puedes सोचा कि ये estar तुम्ही में है? en tristeza. Tú sabes en dónde estás. और ये तो Y होगा esto va a suceder. क्योंकि समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। Resulta que los problemas siempre van a estar बस presentes. इतनी बात है कि किसको परेशान करेंगी, Solamente que a algunos les va a वो बदलते molestar. रहते हैं। Y cuando no entendemos esto, परेशान करने के लिए जो समस्याएं हैं वो तो बनी रहेंगी। किसी का बच्चा खोएगा वो परेशान होगा, किसी का पेट खराब होगा वो परेशान होगा, किसी की चीज खो जाएगी वो परेशान होगा। ये परेशानी तो बनी रहेगी और बनी रहेगी और बनी रहेगी और बनी रहेगी। परंतु जन्म मरण की दुविधा भागी, समरथ नाम भजन लौ लागी। मेरे सतगुरु दीनी सैन सत्य घर, घर मतलब घर नहीं, घर मतलब मेरे में ही मैंने पा लिया, अपने आप में ही मैंने पा लिया।
सबसे बड़ी बात तो फिर ये आ जाती है कि अगर ये दो संभावना तुम में है, तुम्ही में सुख है, तुम्ही में दुख है, तुम्ही में अशांति है, तुम्ही में शांति है, तुम्ही में ज्ञान है, तुम्ही में अज्ञानता है, तुम्ही में शांति है, तुम्ही में क्रांति है, तो जब सवेरे सवेरे उठ के अपनी आंख खोलते हो तो अपने को क्रांति में पाते हो या शांति में पाते हो। और जब ये बात भी समझ में नहीं आती है तो आदमी क्या कहता है, कर्मों का फल है। कर्मों का फल है। Y la gente dice, bueno, es debido a tu karma. याद है कुछ? भगवान कृष्ण ¿Te कहते recuerdas हैं algo? तेरे को याद नहीं होगा, मेरे को याद Krishna le dice algo a Arjuna y dice, tú no recuerdas, pero yo recuerdo. जब मेरे को याद ही नहीं रहेगा Entonces Arjuna कि मैंने debería haberle dicho, ¿para qué sirve el karma si no me acuerdo? जब मेरे को कुछ याद ही नहीं रहेगा। ¿Por qué me dicen sobre mi karma si no me recuerdo siquiera lo que hice anteriormente? Así que es muy importante recordar. और Y सबसे lo बड़ी más चीज grandioso de todo es कि जब सारी लड़ाई खत्म हो गई महाभारत की, cuando se terminó la batalla del Mahabharata, महल में चले गया, Arjuna regresa al palacio पांडव सभी y ahí están todos los, sábenlo todos, sale Krishna un día ये जानने के लिए कैसा para सब ver चल रहा है। a Arjuna, para ver cómo está todo. भगवान आए तो Y Krishna कमरे में गए, va al cuarto de Arjuna. अर्जुन ने उनका Arjuna आदर le किया, da la bienvenida, lo saluda, पलंग पे बैठाया, le hace sentar en la cama. अर्जुन कैसा चल रहा है Y सब कुछ? Krishna le dice, भगवान अच्छा Arjuna, है, ¿cómo va todo? इतने Y साल Arjuna dice, वनवास में रहा, todo इधर está भटकता bien, रहा, उधर भटकता estaba रहा, en el bosque, aquí y allá, ahora estoy en el palacio, tengo este cuarto increíble, tengo bastante comida, todo está bien, fantástico, dice él. मेरी Pero एक tengo un रिक्वेस्ट है, pedido, एक solamente अर्जी un है, pedido. Y Krishna le dice, ¿qué? अजी वो जो आपने मेरे को बताया था ना कुरुक्षेत्र में, ¿Recuerdas aquello que me mostraste en el campo de batalla? Ya me olvidé. मेरे को जो बताया था वो मैं भूल गया। Aquello que me has mostrado, me olvidé. लड़ाई लड़ी, Tengo que ir उसी में y व्यस्त pelear था मैं, la batalla, मैं भूल porque गया। estaba peleando. Peleé y me olvidé. भगवान ने उसको फिर समझाया, Y Krishna le explica otra vez वो a कहते थे él. ना, तो है ही, तेरे को तो याद होना ही नहीं, Él podía haberle dicho, तो काय के लिए si परेशान no किया te उसको फिर recuerdas, समझाने के लिए। entonces te vas a olvidar otra vez. Pero ¿por qué? Krishna se lo explicó otra vez. En otras palabras, कर्मों का फल है, tenemos el resultado del karma, तो जो कर्म तुम अब करते हो उनका फल मिल रहा है। pero es el resultado del karma que estás haciendo ahora. Es lo que estás जो कर्म तुम recibiendo. अज्ञानता में करते हो उसका फल भला नहीं हो सकता, Las cosas और उसका फल तुमको que अभी haces en भोगना ignorancia no traen buenos resultados और भोग y tienes que tolerar los resultados de eso. यही अज्ञानता का मतलब। Ese es el significado de la ignorancia. तुम अगर मेरे से कहो Si tú me dices, कि ये तो बहुत रईस आदमी है, इसके पास गाड़ी y esta es una persona muy rica, tiene una cantidad de autos, tiene esto, lo otro, ये तो बड़ा आनंद में लगता है, y uno diría que esta persona está muy contenta, muy feliz. इसको ये कौन किसका फल भोग रहा है? ¿El fruto de qué karma está esta persona experimentando? अगर स्वर्ग में रहते हुए, Si estás viviendo en el cielo, असली स्वर्ग में Sí. रहते हुए, vives en el cielo verdadero, स्वर्ग को वो नहीं जानता है, y esa persona no sabe इससे que बड़ा es नरक कोई हो este नहीं cielo, सकता। entonces no puede haber un infierno mayor जिसके que el lugar donde अंदर está. ब्रह्म हो,
el divino और वो उस está dentro de प्रभु को ti नहीं y tú no जानता, conoces a इससे ese बड़ी divino, अज्ञानता हो entonces नहीं no सकती। existe una ignorancia चाहे इसके mayor पास que कुछ esa. भी हो, Así que इसके no पास कुछ importa नहीं qué है, es lo que tenga, no tiene nada, क्योंकि इसके पास वो porque no अनुभव tiene esa नहीं है जिसको experiencia अपने साथ ही ले que जाए। puede llevarse consigo. असली Así que ese आनंद contento है verdadero वो उसका नहीं है अभी, no tiene उसका आनंद निर्भर contento, करता है दूसरी depende चीजों en में जो उसके पास las नहीं cosas है, que no las tiene, जो वो अपने साथ que ले no जा podrá नहीं सकेगा। llevárselas consigo. मेरी बात समझे? ¿Entienden lo que les digo? Si entienden, digan sí. अगर समझे तो En कहते हैं hindi, हाँ, si entiendes हिंदी algo, में dices समझे तो sí. कहते हैं हाँ, Y si no, en और hindi lo हिंदी dices में no. अगर नहीं समझे तो ¿Entienden lo que कहते les हैं digo? ना। Si entendieron lo que मेरी les बात समझे? dije, entonces digan no. तो अगर Díganmelo मेरी बात समझे तो ये en su बताओ vida ustedes. ¿Qué tipo de हमारी contento जिंदगी में están experimentando? कौन सा आनंद है? ¿El contento de la ilusión o el माया का contento आनंद है del conocimiento? या ज्ञान का आनंद? Yo estoy diciendo claramente, muy claramente, मैं बात साफ साफ कह रहा हूँ, lo estoy diciendo muy claramente. मैं बात साफ साफ कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति की La persona que tiene las चाबी llaves de su उसके casa en su जेब में bolsillo, है, pero está और tratando वो कभी de दरवाजा romper तोड़ने la की कोशिश कर रहा puerta, है घर के अंदर घुसने की, और सारी कोशिशों के está बाद tratando क्योंकि उसने de अच्छा romper बनाया la हुआ है, puerta y no सारी puede कोशिशों entrar a के la बाद वो casa y किसी no भी puede रूम entrar a la के अंदर casa, प्रवेश नहीं ya कर पा रहा है ha और tratado y al बाहर final está सोया हुआ durmiendo है। fuera de la casa. Está durmiendo fuera de la casa. बाहर सोया हुआ है और अपने आप को कोस रहा है कि Y se उसने está चाबी कहाँ रख culpando दी, y dice, चाबी ¿dónde उसकी dejé las जेब में। llaves? ¿Dónde las dejé? Pero están en su bolsillo. Las llaves están en su bolsillo. चाबी Y se उसके está जेब में है, diciendo, ¿dónde dejé las कोस llaves? रहा है ¿Dónde अपने las आप को कि perdí? मैंने कहाँ रख दी चाबी, कहाँ Tal vez खोया मैं, los dejé aquí, कहाँ o खो los दी dejé मैंने, allá. कहीं वहां तो नहीं रह गई, कहीं वहां तो नहीं रह गई, कहीं वहां तो नहीं रह गई। जैसे कर्मों का फल Y वही esos वाली son बात, los मैं frutos वहां del गया था, मैं karma. वहां Fui तो नहीं allí, lo छोड़ dejé आया, allá, मैं estuve वहां allá, गया tal था, vez नहीं lo वहां dejé तो नहीं allí. छोड़ आया, वहां गया था, वहां तो नहीं छोड़ Pero आया। alguna vez te has puesto la mano en tu propio तो bolsillo, कभी अपने en जेब donde के अंदर हाथ estaba, डाल के देखा कि todavía está ahí. जहाँ रखी थी वही है, Donde pusiste la llave, todavía está ahí. जहाँ रखी थी चाबी वही है, परंतु वहां चाबी अपने आप Pero la llave तेरे por sí हाथ में misma थोड़ी no va a आएगी, ir de tu bolsillo a tu mano. Tú tienes और que तू उसको tomarla निकालेगा, y निकाल abrir कर la उस दरवाजे puerta को खोल सकता y है, खोल entrar के en अपने tu propia आराम से casa. अपने घर में प्रवेश कर सकता है। Lo mismo con la paz. La paz está dentro de ti. शांति के साथ भी यही है, शांति भी La paz तुम्हारे está अंदर है, dentro de ti. शांति भी तुम्हारे अंदर है, परंतु क्या ¿Sientes तुम paz o शांति sientes का अनुभव confusión? करते हो या शांति का अनुभव? Lo que sea que has hecho hasta ahora, जो कुछ भी तुमने अब तक किया है वो शांति tú अशांति का eres muy अनुभव bueno करने के लिए en तो पर्याप्त है। experimentar confusión. अभी स्कूटर में मैं देख रहा था, 3 बैठे हुए थे, सीट 2 की थी, 3 बैठे हुए थे, Yo estaba mirando una motoneta. La हस्बैंड gente तो sentada चला ahí, रहा था, los asientos eran para 2, pero 3 estaban sentados. बीवी पीछे बैठी थी और Uno बीच era में था एक el बच्चा, esposo manejando la मतलब motoneta, कोई 4, la 5 esposa साल estaba atrás दोनों से दोनों के y entre ellos había un niño, tal vez de 4 o 5 años, y estaba apretado entre los मैं dos. सोचने लगा, अभी तो ये दोनों जवान हैं, बड़ी खुशी है इनकी जिंदगी में, ज्यादा समय नहीं बीता Yo होगा, pensaba, शादी हुई,
रिश्तेदारों से मिले, ये सब Todos हुआ, फिर son खबर आई muy बच्चा jóvenes, पैदा हुआ है, no ha बच्चा pasado mucho है, tiempo, tal vez recién se तो casaron, ये se कब तक conocen con चलेगा? जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, parientes, कुछ ना कुछ y गड़बड़ tienen जरूर su करेगा। hijo y están felices. Pero ¿cuánto tiempo va a जैसे तुमने durar की, esto? El niño va a crecer. यहाँ De कोई बैठा alguna ही नहीं है forma él जिसने va a नहीं hacer की algo malo, गड़बड़। así como tú गड़बड़ hiciste छोटी también. मोटी गड़बड़ तो हो ही जाती है। No hay nada, no hay माँ बाप nadie हैं aquí जो sentado सबसे पहले अपने que बच्चे को haya झूठ hecho बोलना algo सिखाते हैं। malo. Todos lo hemos hecho. Y ahí están los padres. दरोगा की तरह उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर कांच का ग्लास टूट गया, कोई Nosotros चीज somos los टूट गई primeros घर en में, enseñar a los hijos तो उसके cómo पास आकर mentir. के बोलते हैं, तेने थोड़ा Si algo se rompe, un vidrio, una ventana, y el padre va al niño y le dice, ¿lo rompiste tú? ¿Lo rompiste? अब अगर वो बच्चा Dime la बिल्कुल verdad. बेवकूफ है, तुम पे गया है, Si el niño es un total तो वो idiota, यही सोचेगा सच सच बता देते हैं। परंतु अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल है, yo le voy a decir la verdad. तो ये सोचेगा Pero पड़ेगी, si el niño tiene por lo menos un poquito de cerebro हाँ कहूं a pensar, तो पड़ेगी, y piensa, अगर मैं si ना digo कहूं sí, तो थोड़ा él me सा va a pegar, चांस है él me va a pegar. कि न पड़े, बच जाऊं। Pero si digo no, que no lo hice, hay una pequeña posibilidad मैंने de नहीं que किया। no me pegue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? दूसरा सवाल, Entonces फिर dice, किसने no, किया? no lo hice. जज साहब या Entonces तो la उसको siguiente कह दो pregunta कि es, वो गिल्टी है, ¿quién lo hizo? या फिर तुम ही उसको गिल्टी प्रूव करने में क्यों लगे हुए? उसी ने किया है। क्या बताते Enfrente, हैं enfrente बच्चे को? al juez, किसी ने ¿cómo कुछ दिया, estás tratando de decir माँ बोलती है que es थैंक culpable o यू no? बोलो, थैंक यू बोलो। बच्चा कहता है थैंक यू। Bueno, por ejemplo, la madre कैसे le थैंक dice al यू hijo, बोल रहा है? जैसे गाली दे रहा है। agradece y gracias. Y el niño dice, gracias. Y el niño, ¿cómo dice gracias? Dice gracias como si estuviese सॉरी puesto बोल bajo बोलते हैं, juramento. सॉरी, मुस्कुरा के सॉरी। La gente dice, lo siento, अरे lo सॉरी dice a का मतलब menudo, होता है con una sonrisa. सॉरी मतलब Lo siento. तुमने जो किया तुम उससे प्रसन्न नहीं हो तो मुस्कुरा काय के लिए रहे हो? हर बात में सॉरी 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 Lo सॉरी। siento quiere decir que le hiciste algo sintiéndolo, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक pero यू। ¿por qué estás sonriendo? Y dices, lo siento para todos. Así que realmente no hay un significado real de decir lo siento, झूठ वहां से शुरू। gracias. No hay nada जो detrás de esas तुम palabras. कर रहे हो, Ahí comienzan जो las तुम कर रहे हो, mentiras. उसका परिणाम खराब हो सकता है। Lo que estás haciendo, सोच के करो, समझ के करो, el resultado puede क्योंकि ser जितनी भी malo. संभावनाएं हैं Así que तुम्हारे जीवन piensa के antes de अंदर, hacerlo, entiende antes de hacerlo, एक संभावना है porque todas las posibilidades están ahí en tu vida. एक Una संभावना है posibilidad es que puedes tener una vida plena. उस शांति का Una अनुभव, posibilidad एक दिन es नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हर दिन तुम इस शांति का अनुभव que कर सकते puedes हो। experimentar esta paz, no por un día, 2 o 3, sino cada चिंता तो día सतनाम की puedes और न experimentar चितवे esta दास, paz en tu vida. और जो चितवे नाम बिन सोई काल की पास, उन चीजों से मनुष्य मुक्त हो। El estudiante quiere estar परिणाम इसका recordando क्या है? aquello. फिर
para que el ser humano esté libre de esa preocupación. उसके बाद तुम्हारा ये जो हृदय है, Entonces tendrás contento en esta vida. Este es tu corazón, tu corazón. Solamente dirá una cosa. ¿Qué será? 13,00,000 धन्यवाद। इस जीवन के लिए नहीं, हर Que, श्वास के लिए, Creador, oh Creador, te agradezco millones y millones de veces. No por esta vida, sino por cada घड़ी aliento. पहनते हैं लोग टाइम देखने के Por लिए, क्या cada टाइम हो aliento. गया है, पर तुम्हारी असली घड़ी कौन सी है? ये Tenemos या ये? un reloj. La gente quiere saber qué hora es, pero realmente, ¿cuál es tu जब reloj ये verdadero? चलना शुरू Este. हुआ तब तुम शुरू हुए, उससे पहले नहीं। Cuando और जब ये este रुकेगा तुम comenzó, रुक जाओगे, उससे पहले entonces नहीं। tú comenzaste, no antes. Y cuando esto se para, tú vas a parar también, no antes de eso. लोग कहते हैं नहीं, No मनुष्य antes तो de eso. पहले ही चालू होता है। La gente dice, los seres humanos han estado desde antes. बच्चा निकले बाहर और श्वास नहीं ले रहा है तो कहाँ जाएगा? Si el niño sale de la sala y no está respirando, ese niño recién nacido, ¿a dónde va a ir? घर नहीं ले जाएंगे। घर जाने Lo van a के लिए encerrar. तो श्वास लेना जरूरी है, No van a llevar a ese niño a la casa. Para llegar और जिस a la दिन ये casa श्वास रुक जाएगा फिर es घर नहीं रखेंगे। importante que haya tomado ese primer aliento. पर इस पे ध्यान नहीं जाता है लोग। Y el día en que este aliento se pare, no te tendrán más en la casa. Pero la atención de la gente no considera eso. La atención de la gente no está centrada en el aliento. क्यों नहीं है टाइम? La gente ha hecho sus reglas desde mucho tiempo atrás. No tenemos tiempo para la paz. हमारा ये करने का ¿Por qué no समय है, tienes ये tiempo करने para का la paz? समय है, ¿Por ये qué? करने का समय है। जब हम Porque बूढ़े हो todavía जाएंगे तब soy हम joven. शांति की खोज करेंगे। Esta es mi oportunidad de hacer esto, aquello. Cuando esté viejo, कौन कह रहा है entonces voy a तुमसे buscar खोज करने के la लिए? paz. लोग आते थे हमारे पास जब हम गए विदेश, हम शांति की ¿Quién te ha खोज कर dicho रहे हैं। que debes buscar? मैंने कहा करते रहो, कभी नहीं Cuando मिलेगी। yo fui al occidente, la gente me decía, estoy buscando la paz. कभी नहीं मिलेगी। Yo les decía, continúa buscando, no lo vas a encontrar nunca. Y ellos decían, ¿qué? Nunca lo vas a encontrar. बिल्कुल सच। ¿Por qué no lo vas a encontrar? Porque está dentro de ti. खोज Está करने के ahí लिए नहीं कह ahora. रहा हूँ मैं, महसूस करने के लिए कह रहा हूँ। तो पहले से ही Realmente तुम्हारे está ahí. अंदर है, उस चीज को महसूस करने के लिए। जब मैं पहले मैंने बोलना शुरू No किया, estoy diciendo a ustedes para que lo busquen, sino que lo sienten, que lo sientan. Está ahí. Cuando yo comencé a hablar लोग कहते primero, थे ये सब शो है, nadie me ये creía छोटा बच्चा इतना कैसे que बोल era सकता yo है, quien hablaba. टेप रिकॉर्डर Ellos लगा decían, रखा है, ये esto es दूसरे solamente un espectáculo, es un niño. No es posible que un niño tan pequeño esté hablando. थोड़ी चलेगा, Hay una grabadora atrás y simplemente ज्यादा दिन नहीं चला क्या? वो नहीं रहे esto no va a durar जो ये mucho. सब कुछ कहते थे, वो नहीं रहे। Estas gentes हम ya यहाँ no के están यहाँ acá, बैठे हैं। esos que dijeron aquello. और आज भी Aquellos 50 साल के que बाद dijeron भी todo eso ya no están aquí y yo sigo aquí. Y वही hoy बात día आगे también, लोगों तक ले después जा रहे de हैं। 50 años, sigo. किसी व्यक्ति ने पूछा कि इसका Todavía दुनिया estoy पे कोई trayendo प्रभाव भी पड़ el रहा है? mismo mensaje a la gente. Alguien me भाई preguntó, ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ¿hay algún impacto लोग हमारी बात सुनते हैं। a este planeta? Yo, mira, no lo estoy साउथ haciendo por dinero. अफ्रीका में ऐसा कोई La gente जेल नहीं escucha है a lo que जिसमें tengo que हमारा decir. पीस एजुकेशन प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता।
गाना में कोई ऐसी जेल नहीं है जहां हमारा पीस एजुकेशन नहीं दिखाया En Sudáfrica no hay ni una cárcel en donde mi programa de educación por la paz no esté presente. अनाथ आश्रम No hay una जिसे कहते हैं, कोई cárcel. ऐसा अनाथ आश्रम नहीं है जिसमें En Japón हमारी किताब स्प्लिटिंग द No hay ningún orfanato, no hay ningún orfanato en donde mi libro, afinando la puntería, mi libro no está ahí. ये पढ़ो Y a los niños les gusta este libro जो कहानी tanto है उसमें que प्रभाव en हो la रहा है noche उसको llevan किसी el मेजरिंग टेप libro से para या leerlo किसी como रूलर un से उसको cuento नापा para नहीं जा dormir. सकता है, Realmente hay un impacto, क्योंकि हर एक no hay मनुष्य के अंदर un metro como अच्छाई medirlo, है और वहां पानी porque en cada ser humano existe lo हर bueno. एक मनुष्य के अंदर वो अच्छा शेर है, उसको खाना Y खिलाना ahí है, tenemos ताकि que वो मजबूत regar, ताकि वो ponerle el agua. Buen लड़ाई león para que ese león sea भगवान नहीं पैदा fuerte, करता है, que tiene लड़ाई que ser alimentado. मनुष्य पैदा करता है। अगर बदलना है किसी को तो मनुष्य को बदलना है। अब La लोग pelea, कहते la हैं lucha आप नहीं no está बदल hecha por पाएंगे Dios, está hecha मनुष्यों को, por los seres humanos. इसलिए Si नहीं alguien बदल tiene que पाएंगे cambiar eso, क्योंकि es el ser इतना humano. लालच है La इस gente संसार me के dice अंदर, que no vas a poder cambiar al ser humano. La razón es porque hay tanta codicia en este mundo. Estoy de acuerdo con मनुष्य eso. में जितना लालच है Lo creo y yo sé que hay उतनी bastante ही codicia. डालता है, क्योंकि 50% Pero la cantidad de codicia que el ser humano tiene, 50% bueno, en realidad hay así igual de generosidad, porque 50% es bueno, 50% es malo. और मनुष्य के अंदर लालच, Dentro del ser humano existe generosidad मनुष्य के अंदर y अशांति dentro भी del ser है, humano मनुष्य के अंदर existe शांति। la codicia. Los dos यही están बात en है los जो dos. मेरे को El ser आशा humano देती tiene है कि caos y también tiene कुछ paz. होगा। देखो Esto es lo que me da esperanza de que algo va a कुछ भी ना pasar. हो, मैं कम से कम बीज तो बो रहा हूं। जंगल एक दिन में नहीं उगता, परंतु बीज बोए हुए हैं, Si no एक ना एक pasa दिन। ninguna cosa, por lo menos estoy sembrando semillas. Una selva no se presenta de pronto, simplemente hay semillas. Y un día habrá una selva ahí परंतु तुमको अपने donde he घर भी puesto las जाना है, semillas. लड़ाइयां भी करनी है, अपने आप से Así que लड़ाई tengo करनी है, अपने bastante परिवार para वालों decir से por un लड़ाई lado, करनी है, यहाँ से निकलते pero समय ustedes लड़ाई tienen que करनी irse a है, la casa. प्लॉट में लड़ाई करनी है, Ustedes ये tienen सब que होगा ही होगा। pelearse con ustedes mismos, sus familias, en la salida tienen que pelear en el parqueo, ahora en el estacionamiento también tienen que... और तुम समझ Esto va a suceder, क्या pero कह रहा हूँ। traten de alimentar este buen león y espero que con eso habrá una transformación en sus vidas. Traten de entender lo que quiero decir, que la paz está dentro de ti. El conocimiento es una cosa tan hermosa que ustedes entiendan, समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं que सुनाते हैं लोग ये entiendan भजन। la canción de Kabir que dice, si tienes el conocimiento, entiendes. Si no tienes el conocimiento, no lo entiendes. Es por eso. क्योंकि उसको मालूम है क्या कहा La जा gente रहा है। escucha a muchas canciones de Kabir. बहुत बहुत दुआ से बाद मैं तो जा रहा हूँ और जगह जाना है, La gente con el conocimiento puede entender el conocimiento. Bendiciones a todos. Y después de esto, yo me voy. Hay más eventos planeados. Y regresaré. परंतु सबसे बड़ी बात है कि El plan es regresar. आनंद लो अपने जीवन में, क्योंकि ये Pero la cosa principal जीवन es disfrutar esta vida. Disfruten esta vida. जो भी हो तुम, कैसे भी हो तुम, कोशिश Porque करो esta vida no la vas a tener una y otra vez. Quien quiera que sea, como sea, donde estés, haz ese इस आनंद esfuerzo. के लिए अपने जीवन को सफल Haz बनाने के लिए। ese esfuerzo por esta paz, por este conocimiento, por este contento, para que tu vida sea plena. रोशनी जब No आती है toma कितना bastante समय लगता tiempo, है, no toma रोशनी bastante जब जाती tiempo. है तो अंधेरे को आने में कितना समय लगता है। रोशनी अंधेरे को हटाती है। ये तो दो बहन हैं, एक तरफ रोशनी है और एक तरफ Cuando la luz अंधेरा llega, है। en cuanto बस फर्क tiempo la इतना है oscuridad कि एक se दूसरे va. को नहीं जानते। La luz llega inmediatamente, la oscuridad
Por un lado está la luz, por el otro lado la oscuridad. Los dos no se conocen, pero viven muy cercanos uno del otro. Tan pronto que la luz desaparece, la oscuridad invade. Tan pronto como cuando la oscuridad está ahí, cuando están muy cercanos uno con otro, pero no se conocen uno con el otro, porque la oscuridad nunca ha visto la luz y la luz nunca ha visto la oscuridad. Tú tienes lo bueno, tienes lo malo. Lo bueno en ti no sabe lo malo de ti. Lo malo de ti no sabe lo que hay bueno en ti, pero viven los dos juntos. Ellos viven en ti, viven en mí. Y todos debemos hacer el esfuerzo para poder alcanzar, esa paz. Dentro de mí existe la bondad. Yo quiero alcanzar aquello, quiero disfrutar, porque esto es la esencia de todo esto. Verdad, conciencia y cuando me conecto con todo eso, tengo dicha. Todo esto se trata de contento. Yo les he dicho anteriormente, hay dos tipos de entretenimiento. Uno es del mundo y otro entretenimiento interior. Cuando tú te entretienes con lo de adentro, no importa qué edad tengas, no hay diferencia. Pero la fiesta de afuera, pero si vas a la fiesta de afuera te van a decir, pero es muy viejo, ¿qué haces aquí? Van a ver verdad, pero cuando tú vas adentro de el entretenimiento de adentro, simplemente continuarás disfrutando, no tiene nada que ver con tu edad, es algo que tú lo podrás hacer y experimentar hasta tu último aliento. Estamos en este camino de la paz. Yo he dicho anteriormente, dame tu amor y te daré paz.